आप हमें हाउस ऑफ चिकन करी के बारे में बताओ। हाउस ऑफ चिकनकारी इज़ इन ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट एंड हम लोग अभी अपनी वेबसाइट से चिकनकारी जो कि हैंड एम्ब्रॉयडरी आर्ट फॉर्म है जो लखनऊ से आता है, उससे बने गारमेंट्स अपनी वेबसाइट पर सेल करते हैं। जब हमने वेबसाइट बिल्ड करा, वी रियलाइज दैट हमारी सेल्स जस्ट बिना इंक्रीज इन एनी मार्केटिंग स्पेंड के दे वेंट 5x इन दैट मंथ. So from 5 lakhs we went to 20 lakhs, 25 lakhs in that month when we launched our website. आप बड़े सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो D2C क्या है? So D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर मतलब कि आप अपने कस्टमर को डायरेक्टली सेल कर रहे हो अपनी वेबसाइट के थ्रू. एंड डायरेक्ट टू कंज्यूमर में द बिगेस्ट एडवांटेज एक ब्रांड को जो होता है वो ये कि आपको कस्टमर डेटा आपका खुद का है, यू हैव एक्सेस टू इट. आप उस डेटा को यूटिलाइज करके अपने कस्टमर को बेटर टारगेट कर सकते हो. दोस्तों, हमारी आज की गेस्ट है आकृति रावल. आकृति हाउस ऑफ चिकनकारी की फाउंडर हैं, जो एक D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर गारमेंट्स का स्टार्टअप है. आपको शायद याद होगा, आकृति और उनकी मदर शार्क टैंक सीजन 2 पे आई थी. हम बात करते हैं आकृति से उनकी जर्नी के बारे में और कैसे सोशल मीडिया और स्मार्ट एग्जीक्यूशन से आप भी एक फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप बना सकते हैं. एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ फर्स्ट यूनिकॉर्न हिंदी. हाउस ऑफ चिकनकारी की जर्नी हैज़ बिन फिनोमिनल अभी तक है, राइट? आप शुरू कहाँ से हुए थे? लाइक एज अ नॉट जस्ट एज अ फाउंडर बट एज समबडी जो जॉब कर रहा था टू गेट दैट माइंडसेट टू गेट आउट ऑफ इट, और फिर गेट इनटू योर ओन सेटअप. वो कैसा था वो ग्रेजुएट शिफ्ट, माइंडसेट शिफ्ट? तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स दोनों लंदन से करी है. एंड आई थिंक एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर मैं हमेशा कॉलेज में, मेरे फ्रेंड्स मुझे पूछते थे कि हम कॉलेज के बाद क्या करेंगे. एंड पीपल वो अपने दे यूज्ड टू शेयर द ड्रीम जॉब्स की हम तो यहाँ पे अप्लाइंग हियर, हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं. एंड आई डोंट नो, लाइक इट वाज ऑलवेज जस्ट समथिंग दैट आई वांटेड टू डू. मैं हमेशा यही बोलती थी दैट मैं 2 साल किसी स्टार्टअप में काम करूँगी, उसके बाद मुझे अपना करना है कुछ. हम लोग तो पूछते थे कि डाउन पीनी है, दैट्स व्हाट जो हम लोग प्लानिंग करते थे. आप लोग की प्लानिंग अलग. आई मीन बट देन दैट्स व्हेन दैट हैपेंड, जब मतलब व्हेन आई यूज्ड टू टेल पीपल कि मुझे अपना कुछ करना है इवेंचुअली, तो मुझसे पूछते थे क्या करना है, मुझे पता नहीं बट कुछ करना है. सो आई ऑलवेज हैड दैट फीलिंग हमेशा कि आई वांट कि मैं अपना ही कुछ करूँ. आई डिडंट नो वेदर इट वुड बी फैशन, वेदर इट वुड बी व्हाट वुड आई थिंक वुड रियली enticed me at the moment when I didn't know what running a business is and I just wanted to have my own business. उस टाइम पर मुझे होता था that अपना फ्रीडम होगा, अपने बॉस होते हो, अपने टाइम पर ऑफिस जाएंगे, अपने मन से छुट्टी करेंगे. बहुत ट्रिकी चीज होती है. बहुत ट्रिकी चीज होती है. सो उसमें ये है कि देन मतलब इट अपने बेनिफिट्स भी हैं उस चीज़ के, राइट. बट जब मुझे मन करता था दैट आई हैव माय ओन बिजनेस, तो ये थॉट थी. बट टुडे ऑब्वियसली मेरी मोटिवेशन टू रन माई बिजनेस एंड मेरी मोटिवेशन की मुझे क्यों बिजनेस में और सक्सेसफुल है ना, वो चेंज जाती है, राइट. आपके साथ एक टीम जुड़ी हुई है एंड आप एक रीजन, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी में. देन एज यू ग्रो, एज यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, बहुत चीज़ें ऐड हो जाती हैं. बट जब स्टार्ट किया था तो मुझे बस ये लगता था मुझे अपना बॉस बनना है. लाइक दैट वाज द मेन थॉट. आपको पता है मोस्ट पीपल फील दैट वे. या व्हाई डू यू थिंक दैट इज? आई डोंट नो, आई थिंक मेरी वर्क कल्चर ऑफ बिग MNCs जो पहले थे, अब स्टार्टअप्स बहुत आ रहे हैं, सो इट्स बहुत फ्लेक्सिबल हो गया है, राइट. हमारी टीम में आई थिंक आई वुड से कि बहुत फ्लेक्सिबल है, लाइक इस टाइमिंग्स हैं ऑफ कोर्स, इन बट देयर इज मोर अकाउंटेबिलिटी ऑन दैट पर्सन. देयर इज नो बॉस. लाइक वी हैव क्रिएटेड एन इंक्लूसिव कल्चर. सब अपने टाइम पर आते हैं, अपना टाइम करते हैं. कोई भी पोस्ट वर्किंग आवर्स फोर्सफुली नहीं रुकता. जिसको रुकना है लाइक दिल से, दे ट्रीट द कंपनी लाइक देयर ओन. सो आई फील मे बी लाइक प्री द स्टार्टअप एरा, उस टाइम पर वर्क कल्चर ऐसा था, वर्किंग आवर्स ऐसे थे. देन स्टोरी स्टार्ट मेकिंग पीपल फील कि हम अब इतना टाइम डाल रहे हैं तो अपने लिए डाल रहे हैं. सो आई थिंक दैट हैपन्स. दैट वाज प्रोबेबली, आई डोंट नो मेरे लिए वो मोटिवेटर था कि नहीं, बट आई जस्ट प्रोबेबली फेल्ट that I think the biggest motivator for me was that I wanted to take 2 days, 3 days off one day. Like, I was working before and I could not go for a wedding because of work. And I just thought to myself, that just feeling of अपना कुछ करना है reinforce हो गई कि I couldn't take 2-3 दिन off for my friend's wedding or family wedding because of work. And अगर ये मेरा अपना होता मैं वहाँ पर काम कर लेती, but I would have gone. I would have reached that place. मैं वहाँ बैठ के लैपटॉप पे कर लेती, but I could at least go. So I think that just reinforced, and then COVID happened, so work sort of reduced also in the startup.
So then I decided कि अब this is the right time to learn, get out and spend time enhancing my learning and just start something. I think मेरा एक फंडा है for people who want to अपना कुछ करना चाहते हैं, right? एक I think basic understanding या फिर basic belief है for those people who want to be founders, entrepreneurs कि जो असली करेंसी है लाइफ में that is time, Yeah. right? And maybe you don't even know it yourself अंदर से, right? You can't क्या कहते हैं put it into words, Yeah. but आपको बताता है यार मुझे ना अपने टाइम का मालिक बनना है, because वो ही करेंसी है. You leave behind all the money, Yeah. you don't take, कुछ नहीं लेके जाते हैं. Yeah. And that is why this very very thoughtful wallpaper, right? Time is money. Yeah. Right? But very interesting. Let's talk about आपका जो business है, right? It is in something called D2C, direct to consumer. Before we begin कि उसमें deep जाए, आप बड़े simply explain कर सकते हो D2C क्या है? So D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर मतलब कि आप अपने कस्टमर को डायरेक्टली सेल कर रहे हो अपनी वेबसाइट के थ्रू, एंड इट डजंट मीन कि आप जैसे मार्केट प्लेसेस एंड ऑल पर भी होते हैं बहुत ब्रांड्स D2C के बाद लाइक अ लॉट ऑफ ब्रांड्स स्टार्ट अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, हाँ, एंड देन वो इवेंचुअली D2C पर अपनी वेबसाइट पर जाते हैं. बट एसेंशियली D2C जो है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, उसकी पॉपुलैरिटी इसलिए भी बढ़ी है बिकॉज मार्केट प्लेसेस पर कंपटीशन इमेंस हो गया लास्ट 5 years में, राइट? कमीशंस इमेंस हो गई. एंड डायरेक्ट टू कंज्यूमर में द बिगेस्ट एडवांटेज एक ब्रांड को जो होता है वो ये कि आपको कस्टमर डेटा आपका खुद का है, यू हैव एक्सेस टू इट. आप उस डेटा को यूटिलाइज करके अपने कस्टमर को बेटर टारगेट कर सकते हो. आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट से कस्टमर डेटा नहीं मिलता है इन एन इन डेप्थ वे, बट अपनी वेबसाइट पे यू कैन क्रिएट यू कैन अंडरस्टैंड अपना कस्टमर बेटर, यू कैन अंडरस्टैंड द रिव्यूज बेटर, यू कैन टॉक टू देम एंड यू कैन गेट अ मच डीपर पर्सपेक्टिव, जिसकी वजह से लोग और स्केल कर पाते हैं बिकॉज दे कैन फाइंड सोल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स क्विकर, बिकॉज वो डायरेक्ट वो कस्टमर फनल पूरा ओन करते हैं फ्रॉम अवेयरनेस टू कंसिडरेशन टू परचेज, राइट? व्हेन यू ओनिंग दैट आई थिंक आप बहुत डिसीजंस बेटर ले सकते हो अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस बेटर करने के लिए, एंड कस्टमर्स तक लाइक यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स क्विकर. राइट. तो बेसिकली लॉन्ग एंड शॉर्ट ये है कि D2C में आप मिडलमैन को गायब कर देते हो, या एंड आपका कॉन्टैक्ट डायरेक्टली Yeah. कस्टमर से होता है, राइट? और उसके बाद जो मेन चीज़ वो होती है कि आप वो फीडबैक भी शॉर्ट कर लेते हो कि आपके कस्टमर को क्या पसंद है, Yeah. क्या नहीं पसंद है, और उसके बेसिस पे आप अपनी रिपीट सेल्स या और वो सब चीज़ें बढ़ा सकते हो. इस पॉइंट पे एक स्टेप पीछे लेंगे. आप हमें हाउस ऑफ चिकन करी के बारे में बताओ. हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड, वेयर इज इट टुडे, एंड एवरीथिंग इन द मिडल जो उसको बिल्ड करने में लगा. So House of Chikankari is an online e-commerce website, and हम लोग अभी अपनी वेबसाइट से चिकनकारी जो कि हैंड एम्ब्रॉयडरी आर्ट फॉर्म है जो लखनऊ से आता है, उससे बने गारमेंट्स अपनी वेबसाइट पर सेल करते हैं. प्राइमरीली हम वुमेन्स वेयर हैं, वी हैव अ मेंस वेयर स्टार्टेड ऑल्सो, वी स्टार्टेड इट लास्ट ईयर, वी फोकसिंग ऑन इट दिस ईयर मच मोर, बट प्राइमरीली हमारे वुमेन्स वेयर पे ही फोकस है अभी. एंड हम लोगों ने 2020 में अक्टूबर में स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, एंड माई मदर इज़ माई को फाउंडर. एंड हमारी जर्नी को अब 2.5 साल हो गए हैं. पहला 1 साल हम खाली इंस्टाग्राम पर थे, एंड सिर्फ इंस्टाग्राम पर सेल करते थे, व्हाट्सएप पर सेल करते थे, एंड आई वाज लाइक द शॉपिफाई मैनुअल शॉपिफाई ऑफ टेकिंग द ऑर्डर्स. तो उस टाइम पर आई थिंक अपने 10 महीने कुछ इंस्टाग्राम पर एंड व्हाट्सएप पर मैनुअली काइंड ऑफ करे. एंड कोविड वेव 2 में जब 1 महीना था हमारे पास, तब हमने और वो टाइम लिया. एंड जब ऑफिस एंड ऑल से डिस्पैच भी इतना नहीं हो रहा था, ऑफिस तो हमारे घर पे ही था, तो हम डिस्पैच तो फिर भी करते थे बिकॉज घर पर ही था, बट स्टिल ऑर्डर्स एंड ऑल थोड़ा एट हॉल्ट थे. उस टाइम पर हमने वेव 2 के बाद हमने अपना वेबसाइट बिल्ड करा. एंड जब हमने वेबसाइट बिल्ड करा, वी रियलाइज दैट हमारी सेल्स जस्ट बिना इंक्रीज इन एनी मार्केटिंग स्पेंड के दे वेंट 5x इन दैट मंथ. सो फ्रॉम 5 lakhs we went to 20 lakhs. 25 lakhs in that month when we launched our website, and there was not much increase in the spend, but हमें realize हुआ that क्योंकि हमारे पास website नहीं थी, हम इतना manual चीज़ों पे focus थे, we were not catering to like the demand that was coming. So that gave us big confidence, and I think सबसे ज़्यादा important ये था that हमारा focus उससे पहले community पे था completely. So because हमने website build नहीं करी थी, हम अपने Instagram पर बहुत ज़्यादा focus करते थे. सो वी वुड फोकस, हम कंटेंट बना रहे थे, एंड ऑर्डर्स जितने मर्जी आ रहे हैं हम लोगों ने, लेकिन कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग बना रही थी उस टाइम पर. एंड आई थिंक दैट कम्युनिटी, वो कन्वर्जन हमें जब हमने वेबसाइट बनाई तब ज़्यादा मिली. सो उसने हमें काफ़ी हेल्प करा. एंड
आफ्टर दैट, आफ्टर जून 2021 हमने फिर कॉन्शियस एफर्ट लिया अपना टीम बिल्ड करने का, ऑफिस मूव करने का, एंड फोकस टुवर्ड्स स्केलिंग, बिकॉज हमें बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था दैट वी कैन इसको हम नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं अब। वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारे लोग जो अभी हमें देखते हैं बेस्ड ऑन आवर ऑडियंस बिटवीन 18 to 35 है, ठीक है, एंड you know that वाला जो segment है, they're extremely active social media पे, and a lot of people in India now are getting more on social media to sell, right? Because obviously Amazon, Flipkart के margins काफी तक हैं, and that basically takes away from your bottom line. Very simply आप बता सकते हो कि for somebody who is just starting out on selling on Instagram पे बेचना चाहता है, कोई product बनाया है उन्होंने, कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे उसको स्केल कर सकते हैं, एंड फाइनली उसको ऑर्गेनिकली वेबसाइट पे जैसे आप लेके आए हो, राइट, ताकि कुछ लॉस ना हो थ्रू Amazon, Flipkart, आपको डायरेक्ट ऑर्गेनिक कर सकते हो. कैन यू ले आउट द Instagram strategy for us? या सो हमारे लिए आई थिंक व्हाट वर्कड वेल वाज दैट हमने कम्युनिटी पे बहुत फोकस किया था स्टार्टिंग में, एंड आई फील कि दिस इज अ रिक्वायरमेंट. आज कोई भी अगर ब्रांड शुरू कर रहे हैं D2C, एंड आप इंस्टाग्राम आपके लिए एक रेलिवेंट प्लेटफॉर्म है बिकॉज आपकी ऑडियंस वहाँ है, so I think it's very important that you focus on that community and the story of the brand rather than the product itself, because everything is about content, right? So that is something that we focused on early on, and it really helped us because it brings that transparency आती है brand में, authenticity आती है कि कौन हमारा product बना रहे हैं, team क्या है, who is it, where is it from. Like I think content की वजह से all these things have become really important, and especially अगर आपकी audience millennials है या Gen Z है, बिना ट्रांसपेरेंसी के आज आप ब्रांड नहीं बना सकते. They want to know, ये मतलब it's the need of the hour, right? They want to know that where am I shopping from, like it's made in India is like growing massively. They want to know कि मेरा product इंडिया से बना है, कहाँ से बना है. So depending on if Instagram is important or not, maybe your audience is on LinkedIn, but today LinkedIn is also growing as a platform, right? Like I think I've seen people become influencers on LinkedIn. People are putting out content. तो जहाँ भी आपकी audience है, I think content is key. It's really important that आप content पे focus करो, because content will give you the community that will love your brand, and वो आपसे आके shop करके चले नहीं जाएंगे, या shop करेंगे return करे चले नहीं जाएंगे. That community comes from content, and I think the biggest advantage is that you keep trying, right? ऐसे नहीं होता कि हर रील्स आपकी वायरल हो जाएगी, कि हर पोस्ट आपकी वायरल हो जाएगी. Today also we keep trying. हम 10 आइडिया सोचते हैं, 50 सोचते हैं, उसमें से भी शायद एक gives us the reach that we expect, like कि थोड़ा वायरल हो जाए. So it's not that कि वो day one से it'll go viral, and you have to be consistent. It helps you build that strong community. But I think the biggest thing that happened to us was one of the reels we made, and my mom early on, we just मेरी mom पर हमने reels बना के डाली थी, like on her journey, like on the roles that she does at the company, and all of that was authentic. कुछ झूठ नहीं था उसमें, right? Like we just shot it and we thought let's put it out, and I think that was the first reel that went viral for us, and we gained about 5 lakh views or something, 500k, and at that time our followers were very less, must be like 30-40k. Today we're at 272k, but at that time 40k से within a week we went to 50k, and हमारी पूरी like जो भी social media team थी उस टाइम, मैं और एक और हमारी head of marketing है शानी थी, like हम दोनों we just like sitting and observing कि ये हुआ क्या है, right? So that's the power, like you keep being consistent, but आपको किस दिन वो consistency का reward किसी भी दिन मिल सकता है, and वो community आपकी इतनी strong हो सकती है, like that's we've experienced first hand, right? So I think, and free है, so you have to capitalize on it. It's all free, you build that yourself, right? अगर आप स्मॉल हो, अगर आपके पास टीम भी नहीं है, आप इंडिविजुअली भी वो कर सकते हो. यू हैव दिस सो मेनी एप्स, आप वीडियो एडिट करके, फोटोज एडिट करके, डू इट योरसेल्फ. एज यू ग्रो यू गेट अ टीम टू हेल्प यू विद इट. सो आई थिंक it's a good medium, low cost medium to build that organic community. नहीं, absolutely. I think अभी का age, right? It's the age of the creatorpreneur. Yeah. Right? And आप भी like on a certain level, you were a creator first, right? You started creating. Of course, there was a product to sell. Yeah. Like the way आपका Instagram grow किया, right? And that was the first channel. Yeah. Right? And people don't get that. Then that is the lowest base that you can start with. Yeah. Right? और लोगों को लगता है कि यार ये सिर्फ दिखाने की चीज़ है, वो है, but वो actually आपके P&L में दिखता है.
बिकॉज आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नीचे होती है बिकॉज Yeah, दोज पीपल मिल नहीं yeah. सो एंड द थिंग इज दैट बैरियर टू एंट्री नहीं है किसी के लिए भी बेचने के लिए. अब टियर 3 टियर 2 इंडिया का भी कोई फाउंडर अगर उसको कुछ बेचना है उसको पता है कि उसके प्रोडक्ट में दम है Yeah. राइट वो कर सकता है. द क्वेश्चन बिकम्स कि आधे लोग लाइक यू सेड कि कंसिस्टेंट नहीं हो पाते राइट. आपके मतलब 1000 2000 फॉलोअर होंगे फिर आप 2 हफ्ते के लिए पोस्ट नहीं करोगे Yeah. तो इन डाइज डाउन. Yeah. तो आई थिंक इस पॉइंट पे ना वी टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट द इंटायर रोल ऑफ Yeah. सोशल मीडिया Yeah. एंड आज के एंटरप्रेन्योर्स को कितनी एडवांटेज दे सकता है विच इज स्टिल अनटैप्ड Yeah. राइट. लेट्स टॉक अबाउट D2C में फिर भी काफ़ी सैचुरेशन है इन टर्म्स ऑफ द फाउंडर एक्टिविटी राइट Right. इनटू दिस थिंग और इज दैट नॉट द केस दैट अभी भी और हो सकता है. I mean, in terms of social media, you mean, right? I think saturation in fashion there is. In my industry, there is immense amount of brands all also trying to reach to a similar set of influencers, say micro, macro. So, our task then becomes, right, as a brand who's in an industry which is saturated, हमारा goal ये होता है, okay, how do we find new faces? We don't want to be seen. As a team, we all said we find, very micro people who are good at content and who want to grow with us. So we consciously focus on that because that helps us keep our acquisition costs also down, but also helps us tap a newer audience every time. क्योंकि आप सारे फैशन ब्रांड्स वही 4 5 10 15 इन्फ्लुएंसर्स को अगर टैप कर रहे हैं, your brand is also lost and you're catering to a similar set of audience. So for us, we consciously focus on constantly getting new faces attached with the brand. That is very important to us. And we do some big collaborations, we get requests, we do that. But हमारे लिए ये important है that हम continuously new faces से अपने आप को attach करें. वेरी इंटरेस्टिंग. आप एट दिस पॉइंट देयर इज अ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ना जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी बिकम्स अ की इशू राइट. तो आपको अपनी मार्केट डीपन करने के लिए अफोर्डेबल होना पड़ता है Yeah. राइट. इज दैट समथिंग जो आप अपने सोशल मीडिया इंटरेक्शन से विथ योर ऑडियंस गेज कर सकते हो प्राइसिंग पावर एंड हाउ यू कैन मे बी इंक्रीज योर Yeah. ओवरऑल पाई. So, yeah, I mean, you get a lot of feedback. I think reviews एक चीज़ होती है. Reviews आपको आते हैं उससे जो आपका प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करता है. So, उससे आपको समझ में आता है कि कौन से प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ कस्टमर सेटिस्फैक्शन कहाँ लैकिंग है. बट आई थिंक सोशल मीडिया बिकॉज पर्सनली मैंने 10 to 12 months खुद डाले हैं राइट इन दैट मैसेजिंग विद कस्टमर्स. I think I still till today read all comments on our social media. I till today all the DMs randomly I'm sitting and I'll just open any DM because I think as a founder you gain so much perspective कि जो खरीद रहे हैं उनका रिव्यू आपको आ गया but जो नहीं खरीद रहे what is the review, right? So are they finding your quality bad? Are they finding a policy on your website जो नहीं है सही? तो वो लिखेंगे that oh my god your return policy is so bad for example. So you again कि जो नहीं खरीद रहे उसके लिए ये barrier है and you have to fix it. Maybe not now, maybe in a few months, but you have to fix it. So for us COD नहीं था for the longest time हमारे पास and वो भी conscious decision था but we saw that people really want it. We realized it at a point कि COD is important क्योंकि the after Shark Tank हमने pre Shark Tank ही कर दिया था but it becomes important after Shark Tank. The kind of audience that came they wanted it. It's a necessity for them. So you get a lot of I think feedback जो आपको जो लोग नहीं खरीदते वो क्यों नहीं खरीद रहे आप वो ठीक कर सकते हो. So I think till date it's extremely important for us to be constantly aware of लोग क्या लिख रहे हैं. Very interesting क्योंकि one of the things जो Indian brands are not known for right is customer experience. Yeah. Whereas US में if you look at somebody like an Amazon right उनका हमेशा से मॉडल ये था कि कस्टमर क्या कह रहा है. Yeah. Right. And उनके पास तो कम डेटा भी था because when they started. Yeah. Right. पर उनका पूरा माइंडसेट ये था कि ear to the ground. Right. कि कस्टमर क्या बोल रहा है. Yeah. Right. Now with the power of social media and being a creator that you can have to the ground. Right. तो वो feedback with respect to your product becomes different. Yeah. Yeah. Do you see like a difference in people who like जो आपके competitors हैं जो यार ये लोग customers की बातें सुन रहे हैं. Right, they are very fast to react. Whereas someone who's like maybe an old school person, laid back, not really listening to this thing. Is that from your perspective? वो दिख जाता है क्या at this point? I think I don't know from a competitor perspective if they're listening or not.
We consciously are. So I don't know if they are, but if they're not, the customers will react, right? And they will see it. Like you will see when they see the repeat, when they see the reviews, it will show. So it's a matter of time. वो आज नहीं सुन रहे उनको 2 महीने बाद सुननी पड़ेगी. Like the customer will force them to take certain calls, and we just take a conscious decision that we don't want to be forced. We want to take it the day we receive it, right? Like it should not be done. One customer felt it should not happen to anyone else. And I think that helps. That really helps at an overall scale. वो एक दिन में नहीं दिखता है आपको in a business. I feel it's a very you have to have a long-term perspective for it. We see it in our repeat. We see in it in our reviews how it's changed from 10 months back. So you can't expect कि आज एक आपने policy change किया या customer driven कोई decision लिया and 2 days later everything is going to be better. But it takes time. It takes 10 months, 6 months, 1 year sometimes to see the impact of it on your numbers. But the numbers will show it for sure. तो आपको one thing that you spoke of अभी कि repeats को भी आप काफी track करते हो. Usually, what is the कितने time बाद somebody buys from you? What is the gap? Let's say 1 महीना 2 महीना. Yeah. So what is that average number? So a lot of customers, like I was a major chunk of our customers are coming between 30 days and then 45 to 60 days. Oh wow, that's very free. Yeah. So we've experienced that, and we've also seen that like especially in India, we have a lot of international customers as well. Especially in India, like people try our brand out with a like more affordable range, and then they come back and place a very big orders. We've seen that pattern. And that makes sense because if you're new for someone, they want to try out our quality first and then, take a call to spend a lot of money on our brand and, a lot of important money to them. No, very true. One of the very interesting places where aap fit hote ho, right, is that your industry is something that you're obviously very interested in. Yeah. Right. And it is also, in fashion, there's a lot of women, right? But there's not a lot of women founders, right? Yeah. Not in fashion, but in general, Yeah. right? So when you kind of get those two interests ek saath, right? Being a founder and being a woman in this space, were there some pushbacks that you felt from the industry, whether that was venture capital or customers or partnerships? What did you feel? I think like both for me and my mother, like it's been pretty good. We've been very lucky. I think everyone around has been from an investment point of view and even from जो भी customers थे, I think हमें ज़्यादा प्यार मिलता है. I would say we get more brand love because there's women involved in the business than any thing which is a hindrance. तो हमारा experience बहुत अच्छा रहा है. I think customer perspective भी everyone loves it because our customers are women. तो वो बहुत excited हो जाते हैं. And early on, like मतलब मैं तो personally सारे customers से बात करती थी. So early on, like half of them have become like my friends, okay, and they would like talk to me in first name and like, okay, Aakriti, we place this order. So I think हमारा काफी अच्छा relationship था from a customer point of view. From an investment point of view also, I don't think ऐसा कुछ भी है. Shows like Shark Tank today, I think that's the mindset they are trying to change, right? They are getting people tier 2 cities से founders ला रहे हैं. Old people, they were 80-year-olds, right, who are coming जो business कर रहे हैं, women. And I think they're just bringing a very diverse set of entrepreneurs which will slowly change the way people think. And I think investor perspective से भी ऐसा कुछ हमें personally feel नहीं हुआ है. What I think I have personally felt or my mom has felt is more from people, general, like, people around you, like, I would say family and friends, क्योंकि जो उनको समझ नहीं आता कि, like, what you're trying to do. So the scale of what you're trying to do, and they would say things like, अच्छा, आपकी शादी के बाद भी आप continue करोगे. Like, ऐसे questions पूछते. So that's when, it hits me that why would you say that? Like, I just recently got married, like 6-7 months back. And like, this is the most common question I was asked. कि आप शादी के बाद भी फिर continue करोगे? And my answer would be like, तो कौन करेगा? क्या जो 100 लोग जो employees हैं, जो, working with us, क्या करेंगे वो? छोड़ दूँ उनको, like, should I just leave them? What do I do? Imagine if you can, अगर आप अपने होने वाले पति से question पूछोगे, continue करेगा? मैं बहुत सारे continue करेगी. So it's very, like, I think deep-rooted societal questions that came up, stuff to my mom, like, early on that, अच्छा तुम्हें क्या ज़रूरत है अब? तुमने 22 साल कर लिया बिना काम के. Like, just don't, like, अब क्या ज़रूरत है? पैसों की क्या ज़रूरत है? So I think it's questions like that make you feel, but a little, I would say, weirded out, but it's fine. As long as I think any woman founder or any woman in any job, themselves, they don't
feel that, you know, they're any different, I don't think it matters. But people will keep saying things. You don't have to feel any different. You have to tune out. Kuch Yeah, right, yeah, right. yeah. I think getting to the end, I'll ask you one final question, right? बहुत लोग ये सोचते हैं इसके बारे में कि यार फैमिली के साथ बिजनेस नहीं करना, राइट? स्पेशली अगर वो खुद अपना कुछ करना चाहते हैं, राइट? आपने अपनी मॉम के साथ किया, राइट? दैट इज लाइक एज क्लोज एज इट गेट. हाउ हैज दैट एक्सपीरियंस बीन लाइक? एंड आई नो बहुत बार ये क्वेश्चन आंसर किया होगा. एंड व्हाट वुड यू रिकमेंड टू समबडी हु इज प्लानिंग टू गो इनटू बिजनेस विद देयर फैमिली? So yeah, I've been asked this question a lot of times, and my mom also. अगर कोई हमसे 4-5 साल पहले पूछता कि हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स होंगे, शायद हम दोनों नहीं मान, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली फैमिली में यू वर्क टुगेदर, बट द पेशेंस लेवल इज ऑल्सो मच लेसर. सो अगर हमें कोई 5 साल पहले बोलता हम दोनों नहीं मानते. बट हाउ इट टर्न्ड आउट फॉर अस इज दैट लाइक आई थिंक इट्स जस्ट सरप्राइजिंग फॉर अस ऑल्सो. जो बेस्ट चीज़ है वो ये कि मेरी मॉम और मेरा फोटे बहुत अलग है. So, and I think, yeah, like, you know, her forte is completely production. It's like to the product side of things and textiles, fabrics. Whereas my forte is completely on the business growth side of things. I'm more into like marketing and, you know, business development, finance. So, हमारे roles बहुत अलग होते हैं. Like early on, जब obviously both of us were wearing multiple hats, तो conflict होती है. It's not like नहीं होती. But the best part, I think, at least with the mother, I can say, like, you know, what I felt कि with the mother, I don't know if any other member of the family can have that feeling. I want to be successful, right? But my mother, if she's my business partner, she wants me to be successful for me. So the energy is doubled, right? She's not thinking about herself. She's not even thinking about, like, she's thinking about me. And also, like, for my mother, I can say, like, she's thinking about all the other, you know, kids who are involved. Like, for her, she calls everyone her kids. All the people, you know, working with her team, because we have a very young team. So for her, she's thinking about me and everyone else to grow. So I think that feeling, you know, just doubles the energy of the positivity of that growth. So operations wise, like, you know, we're both separate, the forte is separate, so it works really well. And even though we have conflict, we both respect that. Like, she knows that, okay, online world, I know, and even though she'll have her inputs, you know, she'll understand, and I'll understand that fabric wise, if, you know, she's guiding the team, she's the better person to do it. So that, I think that respect has to be there, that this person is better at me than this. You have to accept, क्योंकि उसके बिना बहुत मुश्किल है. And I think once you respect that and once you know that, there's a lot to learn for both of us, right? Like, my mom, उनको reels भी नहीं पता था क्या होती है. Now she's addicted to reels. She's like shooting content for reels. Every time we go to Lucknow, she takes out her phone. She's like, तुम reels में ये डाल देना. So, you know, that's how she's transitioned. She didn't even know what influencers are. And today, like, you know, she's understanding how it's working. So for her, it's learning. For me, it's a lot of knowledge about what fabrics are good, what we should not do, what reviews did we get bad on, why did we get it, from a product perspective. So I think it's both ways and it works well. And for anyone starting with family, I think, like, my experience has been good, and I think the support is immense, right? Like, the support is immense emotionally, more than anything. And that's really important on some low days. No, that's wonderful. पता है मैं अपने अभी एक फ्रेंड से बात कर रहा था about what is it like to work with your spouse. Yeah, because अभी मैंने भी शुरू किया है. So जो बताया कि यार ups and downs होंगे until you figure out your areas. Yeah. Okay, before you start stepping in. But अगर मैं एक step पीछे देखता हूँ और I look at my full journey, right? आपको बाद में realize होता है that thank God there was somebody to take care of me during that phase. 100. You're actually taking care of each other. Yeah, right? Yeah. So while all that thing about families में conflict होता है in business में and all that, I think ये एक बड़ा missed point है. Yeah, right, which needs to be the thing. But Aakriti, thank you so much for your time today. बहुत मजा आया. And thanks so much. I had a great time. Thank you. Thank you for watching. And for more such insightful discussions, like, share, and subscribe.